Morning everyone. Today we are going to continue with the types of asexual reproduction. Earlier we have read about binary fission, in which a single celled organism divides into two cells, as well as multiple fission. Then we have discussed about budding, in which an outgrowth is seen, which we call as bud, which further grows and form a new individual. After that we have discussed about regeneration, in which a cut or the broken part of the organism give rise to a new individual. Then we have discussed about fragmentation, in which fragments of the individual give rise to new organisms or new individuals. Now the next type of asexual reproduction is spore formation, in which structures called sporangia, they produce tiny cells called spores. These spores, as they come in contact with the moist surface or they get the favorable condition, they develop into new individuals. Now look at here, picture is showing of germinating spore. As soon as these spores get favorable conditions, they start growing. And what are their favorable conditions? First of all, moisture, and secondly, temperature. Therefore, you can see during these rainy days, during this monsoon, what happens? You can see fungus growth everywhere, even on your shoes, leather belt, on the walls. Why? Because humidity, moisture is quite high, which is favorable for the growth of fungus. So these spores, as soon as they get the condition, they start growing. And one more interesting thing is that these spores, they are having thick walls, which allow them to resist, which allow them to persist for longer period of time. That means कि आपके ये स्पोर्स बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, यानी गर्मियों में भी आपके स्पोर्स होते हैं, बट बिकॉज दे डोंट गेट कंडीशंस दे वॉन्ट ग्रो दैट टाइम. बट एज सुन एज जैसे ही आपकी कंडीशंस मिल जाती है, आपका मॉइस्चर मिल जाता है, टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो जाता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर. So this is a kind of structure which allow these microorganisms, which allow these organisms to survive for longer period of time. Okay, and here are some examples: Rhizopus, Mucor, Penicillium. These are what? These are different fungus which grow as spore formation. Now next type of asexual reproduction is vegetative propagation. Earlier we have discussed that asexual reproduction is mainly done by lower organisms or mainly done by single cellular organisms, but there are some plants which also reproduce asexually, which also does not require two parents, and we call this process as vegetative propagation. Now why we call it vegetative propagation? Because these plants, they grow with the help of their vegetative parts. Now what are vegetative parts? These are the parts of the plant like root, stem or leaf, which do not have direct role in reproduction. यानी ये वो parts होते हैं plant के जिनका direct reproduction में role नहीं होता, but exceptions are there. कुछ plants आपके इनकी help से भी reproduce कर सकते हैं, इन parts की help से भी नया plant generate कर सकते हैं. For example, dahlia, sweet potato, these are the plants which can grow from their roots. Potato, ginger, ये आपकी stems होती है, which can grow from the stems. And from leaf, bryophyllum, begonia, these plants can grow with the help of their leaves. Now look at the pictures here. These are the pictures of bryophyllum. आपकी left corner में bryophyllum है और right corner में begonia. Look at the tips of these plants. आपकी tips, लीव्स की टिप्स पर नई लीव्स जनरेट हो रही है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली दे ग्रो इन साइज, देन दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट लीफ. सो दीज आर द plants which can grow by vegetative paths. Now what is the importance of this vegetative propagation? There are various important notes over here. First of all, plants which are not capable of producing seeds, or plants which do not produce flowers or fruits, they can be reproduced by the help of vegetative propagation. यानी ऐसे plants जो seeds नहीं बना सकते या जो seeds नहीं बनाते हैं, those plants can be reproduced by vegetative propagation. Secondly, second advantage, plants which are produced by vegetative propagation, they produce
फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी अगर आप इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट्स फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी बनाते हैं, जल्दी आते हैं इन पे एज़ कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी जो प्लांट सीड से हम प्रोड्यूस करते हैं उनसे जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाते हैं। एंड थर्ड एडवांटेज दैट the plants which we can grow by vegetative propagation, they are exactly same with the parent plant. Like for example, you have a rose plant which produce many flowers throughout the week, and you want even only that plant to grow more plants. आप चाहते हैं वही रोज़ प्लांट से ही आपका गार्डन हो, वही रोज़ प्लांट से आपको वैसा ही रोज़ प्लांट्स हो आपके सारे, ताकि इतने ही फ्लावर्स आपको हर रोज़ या वीकली मिल सके। सो वट यू आर गोइंग टू डू, यू गोइंग टू यूज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप उसी प्लांट की स्टेम कटिंग यूज़ करके नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, एंड न्यू प्लांट्स विल बी एज गुड एज द पेरेंट प्लांट। सो आपके जो नए प्लांट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपके पेरेंट प्लांट होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस। एक तो हम सीडलेस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, सेकेंडली फ्रूट्स और फ्लावर्स आपको जल्दी मिलते हैं, एंड थर्ड वन, these are similar to the parent plant. Okay, now these are the different methods by which these plants can be grown, like cutting, layering, grafting. So these are the different methods of vegetative propagation in plants. Okay, so these are the different types of asexual reproduction. Now we are going to start with the sexual reproduction in plants. That means in which two parents are involved. One is male and other is female. Now first of all, let's just study the structure of the flower. This is what flower. This flower is mainly having 4 holes, यानी 4 layers होती है. Outer 2, that means green leaf like structure, these sepals, and these colorful petals. These 2 are accessory layers or accessory holes, means they do not have direct role in reproduction. यानी अगर ये दोनों ना भी हो तो भी reproduction plants कर सकते हैं. Sepals, green leaf like structure और colorful petals, these are accessory holes, and inside them there are 2 reproductive holes या 2 important holes. Third one is your stamen, this one, male reproductive organ. Stamen consists of 2 parts, anther and this long stalk-like structure which is filament. आपके इस anther के अंदर ही क्या बनता है? Male gamete which is pollen grain. Now, the fourth region of the your fourth layer, आपकी innermost layer is your female organ of the plant which is known as pistil. ये क्या है आपका? सेंटर में pistil. And this pistil again consists of 3 parts, 3 regions. Stigma, uppermost stigma जो sticky होता है, neck region, style, and the swollen part जो नीचे से बड़ा सा part आपको नज़र आ रहा है, which is ovary. आपके इसी ovary के अंदर क्या होता है? Female gamete which is ovule. Now what are these gametes? I'm using this word again and again. Male gamete, female gamete. Gamete means स्पेशलाइज्ड सेल और रिप्रोडक्टिव सेल जिनका डायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन में. तो आपका मेल गैमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन. और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओव्यूल. दीज 2 आर हैविंग रोल इन रिप्रोडक्शन विच वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विच इज हैविंग रोल इन रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप हमेशा सुनते हैं प्लांट्स दे ग्रो फ्रॉम सीड्स. सो सीड्स बनाने में आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोल प्ले करता है. अभी हम पढ़ेंगे कि आपका जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जब आपके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? पहले क्या बनेगा? सीड. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन you just draw the diagram in your book and read the chapter and do the assignment. Thank you.